where we are going to talk about introduction for the gender anatomy. So this is very easy topic. You don't have to, like we are just going to talk about the general terminology used in anatomy. So the first thing, what we start with, the position, the language of anatomy. If you want to learn anatomy, the first thing you need to know about the anatomical position. So in the first picture, we can see that this is an anatomical position where you are standing straight, सीधा face कर रहे हो, you are standing straight, and your palm is facing in a forward direction. So in the first picture, how the person is standing, that is the anatomical position. This is the best way to learn anatomy. That if I want to learn about the anatomy, this is the ideal position for the front side, for the back side. आगे से पढ़ना हो या पीछे से पढ़ना हो, उसके लिए this is an ideal position which is called as anatomical position. So it's a person is looking in front with his eyes in forward direction, palm is facing forward. Both arms are at the by the side of the body, both feet together, and the position, this position is called as anatomical position. So the eyes in front, the arms will be on the side, the both feet. We can see in the picture the both feet in the front direction, they are together. They दोनों पैरों के बीच में ज्यादा जगह भी नहीं होनी चाहिए. So this is an ideal anatomical position. Now in the second picture, what we see is the supine position. So in supine position, we can see when we are lying down on our back. Okay. So when a person is lying on his or her back, arms at side, and palms will be facing upward. So palms will be facing upward and feet pulled together. दोनों पैरों साथ में होंगे, palm will be facing upward, and this is the position which is called as supine position. So this is another way. As a physiotherapist, हम कई सारी exercise ये supine position में करवाते हैं. And even to learn anatomy, when you go for the dissection, you need to keep the patient in supine. I mean, you need to keep the cadaver, the dead body, जो हम बोलते हैं cadaver, जो anatomy को पढ़ने के लिए use किया जाता है, वो भी supine position में रखा जाएगा. The next is the prone position. So prone position आपने शायद सुना होगा during COVID time, कोरोना के टाइम पे patients को prone में रखा जाता था. So this is an ideal position to improve the function of the lungs. सेम वे पे एनाटॉमी में बैक साइड के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए भी कैडेवर को प्रोन पोजीशन में रखा जाता है. सो प्रोन पोजीशन व्हेन द पर्सन इज लाइंग ऑन हिज फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन. सो व्हेन यू आर लाइंग उल्टा, व्हेन यू आर लाइंग इन्वर्टेड पोजीशन, जब आप उल्टा सोते हो on your face, on your chest, and on your abdomen, that position is called as prone position. And after that, the next is the lithotomy position. So the person will be lying on her back with legs up and feet supported in straps. So we can see the female over here who is lying on her back. The feet are supported, they are strapped together, and this position is mainly used during the delivery period. So when the baby is going, when the mother is going to deliver the baby, जब एक फीमेल बेबी को डिलीवर करने वाले होते हैं, ऑन दैट टाइम दिस इज एन आइडियल पोजीशन इज केप्ट फॉर दैट फीमेल. So this is going to ease that pregnancy process. After that, the planes. So to understand about the anatomy, you need to know about the planes also. The plane is a surface where the movement is happening, where the body is divided into certain segment. So in that we have different planes. The first is the sagittal plane. So sagittal plane is the plane where it is passing through the center of the body and dividing the body into right and left. So this is going to divide your body in a equal half on right side, on left side. In that way, the right and left is going to get divided by the sagittal plane. This is also called as mid-sagittal plane, या फिर it is also called as median plane. So this is a line which is passing through the center of the body. एक line जो होगा imaginary line जो आपके center of the body में से pass होगा और जो body को दो में divide करेगा, right half and left half. Okay, so this is called as sagittal plane. We can see in the first picture, this one is the sagittal plane. The second one is the coronal plane. Same like sagittal plane, the coronal plane is dividing the body into anterior half and posterior half. मतलब कि बॉडी को एंटीरियरली और पोस्टीरियर डिवाइड करेगा. ये भी लाइन यहाँ से पास होगा. ओके, इमेजिनरी प्लेन which is passing through here and it is dividing your body into anterior and posterior part. So if I want to learn about the anterior and posteriorly,
I need to go through the coronal plane. I need to think in the same form of coronal plane. So coronal plane, it's a plane at right angle of the sagittal plane. So you have sagittal plane in this way, uska right angle, the 90 degree of it. So sagittal plane, uska right angle is coronal plane at 90 degree of that, which divide the body into anterior and posterior part, and that is called as coronal plane. The next is your transverse horizontal plane or transverse plane, or else you can say horizontal plane. So this is dividing your body in upper and lower half. Okay, so this will be the plane which is again at a right angle of both uh, sagittal plane and frontal plane when it is passing, and through that at a right angle when the body is divided into upper half and lower half. So here we can see in the in the first picture the transverse horizontal plane. So that is dividing your body in the upper half and lower half. So if I want to talk in the form of upper half of the body or lower half of the body, so we learn it in the form of transverse plane or horizontal plane. So transverse या horizontal plane जो होता है वो हमारी बॉडी में फ्रंटल प्लेन और सजेटल प्लेन और कोरोनल प्लेन के राइट एंगल मतलब उसके 90 डिग्री से पास होता है, दोनों प्लेन के 90 डिग्री से, तो बॉडी को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेगा. The next is the oblique plane. Oblique plane, we can see in the second diagram. So it's any other plane other than coronal, transverse, and horizontal. Coronal, transverse, and horizontal के अलावा कोई भी और plane होगा जो half like जो ऐसे slanting position में body में से pass होता है. So that is your oblique plane. Then we have a cardinal plane. Cardinal plane is if any plane traverses the center of the body is called as cardinal plane. So the plane which is passing through the center of the body is called as cardinal plane. Other than this, the other term which we use is a fundamental position. So fundamental position is like the first A diagram. We can see it's an anatomical position जहाँ पे दोनों palm forward में face हो रहा है. यहाँ पे उसके बदले palm is facing inside. So the person is standing in a normal situation and his palms are facing inside towards his thigh. So that is actually the B diagram is actually a fundamental position. So fundamental position, it's a comfortable position and we don't use this position to learn about the anatomy. We use the anatomical position itself. हम लोग anatomical position को use करते हैं anatomy को पढ़ने के लिए. लेकिन फिर भी this is an ideal position, ये comfortable position होता है. Generally हम लोग ये position में अपने आप को ज़्यादा comfortable मानते हैं. So we tend to be in this position. Now the terms which is used in relation to trunk, neck, and face. So we are just going to talk about this terminology. We don't have to go in detail about it. So the first is ventral or anterior. So either you talk about your face, neck, or trunk part. उसके ventral or anterior मतलब कि the front part. Okay, this is the front part of it. Or anteriorly, which is facing anteriorly, आगे की तरफ का. So it's the front of the either trunk, neck, or face. Trunk, neck, or face का आगे का part is called as ventral part or anterior part. Same way पीछे का is called as dorsal or posterior. तो आपके trunk, neck और face का पीछे का part is called as dorsal. Then you have medial जो होता है वो median plane मतलब कि जो mid line है हमारी body से उसके नजदीक होता है. So those structure which is present towards your midline उसके लिए medial term use किया जाता है. So medial and then lateral is away from the midline. तो जो structure हमारे body से बाहर की तरफ होता है उसको lateral term use किया जाता है. Over here in the PPT we can see that it's a mistake where lateral and after that lateral the pronunciation it's a wrong spelling. It's just lateral lateral and the proximal, cranial and superior which need to be a new point जो इसके साथ ही add on हो गया, तो that's a mistake. So the next we have उसके बाद जो है तो we saw that medial जो midline के नजदीक है, lateral जो midline से away from है, like जो दूर है midline से, that is called as lateral. तो फेस में, नेक में, ट्रंक में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो लेटरल पार्ट में होंगे जो बाहर की तरफ. मीडियल जो होगा वो मिडलाइन की तरफ, मीडियन की तरफ होगा. Then you have proximal, cranial or superior. Proximal which is upper part like towards the center. Cranial is like head
दैट एरिया, और सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ का। तो जो भी स्ट्रक्चर ट्रंक, नेक और फेस के, दे आर लाइक क्लोज टू द हेड एंड ऑफ द बॉडी, हेड एंड ऑफ द बॉडी, जो हमारे सिर के नजदीक है, वो स्ट्रक्चर के लिए प्रॉक्सिमल, क्रेनियल या सुपीरियर, इधर यू कैन यूज प्रॉक्सिमल टर्म, या फिर आप क्रेनियल की तरह उसको बोल सकते हो, या फिर सुपीरियर भी बोल सकते हो। सेम भी उसका ऑपोजिट होगा डिस्टल, कॉर्डल एंड इंफीरियर। कॉडा, कॉर्डल का एक्चुअल मीनिंग होता है टेल। ओके, कॉडा, कॉडा मीन्स टेल, पूंछ। हमारे में पूंछ नहीं होता, बट जो चीज नीचे की तरफ होगी उसके लिए हम कॉर्डल वर्ड यूज करते हैं एनाटॉमिकल। either you can use distal, caudal और inferior। inferior मतलब नीचे, distal मतलब नीचे की तरफ। तो जो स्ट्रक्चर हमारे फुट एंड की तरफ होंगे, नेक में, फेस में या ट्रंक में, फॉर देम इट इज यूज्ड डिस्टल वर्ड, डिस्टल टर्मिनोलॉजी, caudal टर्मिनोलॉजी या inferior टर्मिनोलॉजी। देन यू हैव सुपरफिशियल। सुपरफिशियल जो स्किन की तरफ होगा, जो स्किन के तुरंत नीचे मतलब ऊपर की तरफ जो है, आप ट्रंक में जैसे इफ यू सी, जो स्किन के तुरंत ही पास होगा, वो उसके लिए सुपरफिशियल टर्म यूज किया जाता है। So it's a closer to the skin or towards the upper surface of the body, and deep जो deeper into the skin है, जो स्किन के बहुत नीचे है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारे फेस, ट्रंक, नेक में जो स्किन की तरफ होंगे उसके लिए सुपरफिशियल। नॉट ओनली फेस, ट्रंक और नेक, आपके हाथ मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के लिए भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रंक, नेक और हेड की बात कर रहे हैं। तो सुपरफिशियल विच इज टूवर्ड्स द स्किन, जो स्किन के नजदीक है, और डीप विच इज अवे फ्रॉम द, लाइक विच इज डीपर इनटू, लाइक जो उसके बहुत नीचे है वो। ipsilateral which is on the same side of the body. So if I'm talking about right side of the trunk, so right side of the trunk में कोई स्ट्रक्चर के बारे में मुझे बात करनी, या फिर मुझे फेस का राइट साइड, जैसे कि दिस इज राइट साइड ऑफ माय फेस, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ माय फेस। If I want to say that ipsilateral eye, मतलब कि if I'm talking about right side and then I'm using ipsilateral, मतलब कि right side के structure, same side के structure। उसी तरह contralateral, opposite side के structure। तो ipsilateral मतलब same side, contralateral मतलब opposite side। Then you have invagination. It's like projection inside, or evagination is projection outside. This is mainly used for the prolapse disc. This terminology is used for that. So anything which is entering inside the structure. So बाहर से जब अंदर की तरफ आता है, it is called invagination, और बाहर जाएगा, it is called evagination। The next thing is terms used in relation to the upper limb. So again, same like trunk, it is ventral or anterior. तो आपके upper limb का आगे का portion, when you are standing in anatomical position, ओके आप जब anatomical position में ऐसे करके हाथ रख के खड़े रहते हो, तो जो हाथ का आगे का पोर्शन होगा उसके लिए वेंट्रल और एंटीरियर टर्म यूज किया जाएगा। इसी तरह पीछे का जो पोर्शन होगा उसके लिए पोस्टीरियर और डॉर्सल टर्मिनोलॉजी use किया जाता है। This is when you are standing in an anatomical position. Then you have medial border and lateral border. So जैसे if I'm talking about my hand or arm, so medial border is like this. If I stand in anatomical position, so this will be in this way, right? So towards my little finger, towards my ulnar side, they all structure which is present, they are termed as structure towards the medial border। और उसी तरह थंब साइड या रेडियल साइड जो होगा उसके लिए लेटरल बॉर्डर टर्म यूज किया जाता है। सो इसको समझने के लिए आपको पहले एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े रहना पड़ेगा, तो उससे उसके हिसाब से यू कैन कम टू नो के हाउ दिस मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर इज गोइंग टू वर्क। Then same way proximal, so towards the head, yeah, towards the shoulder. So shoulder joint is a proximal joint. Okay. Distal you have phalanges, नीचे की तरफ आपके, towards the head is the proximal, नीचे जाओगे तो distal यूज होगा। अगर मैं एल्बो की बात करूं तो एल्बो के प्रॉक्सिमल है शोल्डर जॉइंट, और उसके डिस्टल है रिस्ट जॉइंट। ओके, तो इन दैट वे पर्टिकुलर जॉइंट, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर मसल के हिसाब से उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल कंपार्टमेंट या डिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। Then palmar aspect of the hand and dorsal aspect of the hand. So this is my palmar aspect of the hand. This portion is my palmar aspect. This portion is my dorsal aspect. So the back side of my hand is called as dorsal aspect of the hand, and front side of my hand is called as palmar aspect. Then you have flexor aspect and extensor aspect. So all those muscles which are flexor, which is helping you for the flexion, mainly the front side of your
upper limb is the flexor aspect, जहाँ पे सारे flexor muscles होता है, और पीछे की साइड पे सारे आपके एक्सटेंसर मसल्स। जो कंपार्टमेंट एक्सटेंसर ग्रुप होता है जहाँ पे वो आपके शोल्डर को या एल्बो को या फिर रिस्ट फिंगर्स को एक्सटेंशन के लिए हेल्प करता है, वो सारे कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के नाम पे जाने जाते हैं। Same way for the lower limb. Lower limb में posterior aspect and anterior aspect. So anterior aspect is the front side of the lower limb, आपके पैरों का front side. If you are standing in an anatomical position, तो उसका जो front side होगा, it is your anterior aspect. और पीछे की side जो होता है, जहाँ पे gluteal aspect, back of the thigh, back of the leg, calf का जो part होता है, वो आपके posterior compartment में आता है। उसी तरह medial border and lateral border, inside of the thigh वो कंसीडर किया जाता है मीडियल बॉर्डर, जो आपके थाई, दो थाई नजदीक, दो व्हेन टू थाइज आर टुगेदर, तो जो इनर बॉर्डर है इट्स अ मीडियल बॉर्डर, और जो बाहर की तरफ है इट्स अ लेटरल बॉर्डर। सो इट्स लाइज अलोंग द बिग टो, जो आपके बड़ा जो टो है पैर का उसके साथ जो रिलेटेड पूरा आ रहा है ऊपर की तरफ, वो सारा मीडियल बॉर्डर होगा। बाहर जो लिटिल टो है वहां से लेके आउटर थाई, आउटर लेग इज योर लेटरल बॉर्डर। Then flexor and extensor. So flexor aspect for the lower limb, flexor aspect is back side. जबकि for upper limb, the flexor aspect was in the front. यहाँ पे वो पीछे होगा, lower limb में पीछे की तरफ होता है। जो पार्ट पीछे की तरफ है वो सारे आपके फ्लेक्सर एस्पेक्ट, वो सारे फ्लेक्सर्स होते हैं हैमस्ट्रिंग जैसे, पीछे के आपके बैक ऑफ द थाई मसल इज हैमस्ट्रिंग विच इज वर्किंग फॉर फ्लेक्शन। एक्सटेंसर एस्पेक्ट लोअर लिम्ब में आगे की तरफ होता है, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स जो नी एक्सटेंशन करता है, तो आपका आगे का मसल हुआ वो। उसी तरह proximal distal, proximal is towards the hip joint, towards the trunk. तो those structure which is towards the trunk, उसके लिए proximal term use किया जाता है, and distal towards the ankle, toes and all, for them it is used distal terminology. So here we come at the end of the general introduction regarding the terminology and all. I hope you are thorough with it. If you have any doubt, do let me know in message. Thank you.